So, hello everyone. Today we are doing the last booklet over here. Yes. So this is the last booklet, booklet number 6. This covers uh, original loss curve and CAT modeling. So we'll try to cover a variety of questions over here. Starting with question number 3 over here is September 2010 question 5. Okay. So this is a question on original loss curve. It says the chart below shows three exposure curve. So we have three exposure curve, 1, 2, and 3. Y is the random variable representing the size of the loss as a proportion of the total sum insured M. The curve are used for losses only. ठीक है, exposure curve का formula भी दिया हुआ है and LEV is the limited expected value. ठीक है ठीक है, उसके बाद it says LEV का formula and then we need to state the key assumption. So first, they are asked us to state the key assumption between the relationship of y and m. So what is the key assumption in original loss curve that we take between y and m? Anyone? So if you remember, the basic assumption of original loss curve was that y is independent of m. So y is the ratio of the loss size divided by the uh, sum insured, right? M. So y is independent of m is our basic assumption over here. Next, can anyone say what are the properties of LEV curve? Like what is the shape of the LEV curve and how does it behave? Increasing at a decreasing rate. Correct. It increases at a decreasing rate. So again, if it is increasing at a decreasing rate, so what would be the shape? Is this is the limit and this is the limited expected value. As the limit increases, the limited expected value increases. It is a non-decreasing function. It increases at a decreasing rate and hence the shape of the curve is a concave. So these are the property of LEV curve, and as we have seen that LEV, the original loss curve is a function of LEV curve only. So all the properties of LEV curve also translates to the properties of original loss curve. It also has a concave shape. It also increases at a decreasing rate. It is also a non-decreasing function, right? So over here we have three curves, A, B, and C. If we can draw a diagonal over here, we can notice that curve C doesn't hold a property. It is not a concave curve. It is not concave in nature. Hence, this curve is not appropriate for an original loss curve, right? So the only curve which is appropriate is A and B. Let's see what are the further questions that they have asked. Assume that we have calculated the ground up premium for a property risk. You now want to use the curve above to calculate
an appropriate premium for a layer of loss between 0 and m/2. ठीक है, तो explain the relationship that you would expect between premium for this layer using curve A and B without doing any calculation. So we need to state what would be the relation. मतलब, if we calculate the premium using curve A and curve B, what would be the difference? Explain the relation that you would expect between premium for this layer calculated using A and B. So अगर A और B curve use करके we are calculating the premium, so what would be the relationship or difference between the premium? So यहाँ पे if you see हमने हमको बोला है कि 0 से m/2 का लॉस का लेयर निकालना, ठीक है. सो दिस इज द लॉस, ये x वैल्यू है, ठीक. हमें y पॉइंट निकालना होता है ओरिजिनल लॉस का करने के लिए. तो 0/m, m/2/m, सो इट इज 0 एंड 0.5. तो पॉइंट्स जो हमें लेना है वो g0 एंड g.5 का लेना है, ठीक है. तो जीरो जीरो पे जो g है दैट इज जीरो ओनली व्हेन y इज इक्वल टू जीरो, g ऑफ जीरो इज जीरो, ठीक है. अब y जब 0.5 है इन बिटवीन दिस वाला, तो ये इसको ही लेना, ठीक है. तो व्हाट आर द वैल्यूज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग. तो कैन एनीवन से कि कौन से कर्व से प्रीमियम ज्यादा आएगा? Is it D? Because faster, like बड़े claims faster आते हैं ना, I think ऐसा होता है, like it's the more closer it is to the diagonal, the claims that develop. करेक्ट, Bigger बट claims. हाँ. हाँ, यू आर करेक्ट कि जो कर्व विच इज क्लोजर टू द डायगोनल उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लेम्स डिस्ट्रीब्यूशन, दे हैव स्मॉलर, मतलब लेस अट्रिशनल ऑफ स्मॉल क्लेम्स एंड मोर लार्ज क्लेम्स. बट यहाँ पे वी आर सीइंग कि ये जो पॉइंट है, हाउ डू वी रीड दिस ग्राफ, कि ये 50% का जो पॉइंट है, y इज द लिमिट. तो वी हैव लिमिटेड आवर क्लेम्स टू 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड. So what is the probability of getting losses under this limit? So this is the probability points. So there is a approximately maybe 70 to 80% के बीच का probability of getting this loss under B वाला curve, and A वाले curve में there is a 90% chance, right? So if there is a higher probability of getting lower claim and you are deciding the premium of the lower limit only, तो प्रीमियम वी विल चार्ज हायर, राइट. अगर एक्सेस लेयर का बात कर रहे होते हैं, इफ वी आर प्राइसिंग फॉर द एक्सेस लेयर, उस केस में देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि कर्व बी से वी आर गेटिंग मोर लार्ज क्लेम, और उस लेयर पे लॉस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. इफ लॉस का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगा, प्रीमियम ऑल्सो वी विल चार्ज हायर. तो यहाँ पे द प्रीमियम वुड बी हायर इफ वी यूज कर्व ए. इज इट क्लियर? यहाँ पे वी आर कमेंटिंग ऑन द प्रीमियम, और ग्राफ वाला जो है मे बी हाँ. डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लेम साइज अंडरलाइंग द कर्व ए एंड बी टू डिफर. तो
claim size पे when we are commenting, then we will comment कि since this is a curve which is closer to the diagonal, so again same probability ले ले, अगर probability level पे ले कि 60% probability है कि लेयर 20% लेयर वाले पे आएगा, एंड अगेन कर्व बी में देयर इज अ 60% का सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर लिमिट क्लेम। तो कर्व बी में लार्ज लॉसेस ज़्यादा है कंपेयर टू कर्व ए, तो क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन पे वी विल कमेंट कि कर्व बी हैज अ हायर proportion ऑफ लार्ज क्लेम्स देन कर्व ए। बट प्रीमियम पे जब कमेंट करते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रीमियम जिस लेयर के लिए प्रीमियम डिसाइड कर रहे हैं उस लेयर का अगर लॉस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा तो प्रीमियम उस कर्व के लिए ज़्यादा होगा। अगर हायर लेयर या एक्सेस लेयर के लिए प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे होते तो कर्व बी से ज़्यादा आता, बट सिंस यहाँ पे प्राइमरी लेयर और या इनिशियल स्मॉल क्लेम्स के लिए प्रीमियम डिसाइड कर रहे हैं तो कर्व ए से ज़्यादा आएगा। Next, it is saying describe the approach to select the most appropriate curve for rating exercise. So, what is the approach of deciding the curve? So, firstly, let's see what they have here. To decide on the appropriate loss curve, we first need to know the underlying risk that the curve is covering. So, find out the property risk underlying the curve, match our property in terms of coverage, location, and use. So, we will match our portfolio with the portfolio of the underlying curve in terms of coverage, location, and use. Then we will test the authenticity of the curve by establishing who has produced it and how, what all assumptions have they taken, whether it is credible or not. Then we will seek underwriter's view on the likely distribution of claims from our property and compare it with the curves. So पहले वाले में हमने पोर्टफोलियो को कंपेयर किया, पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क, एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट पे वी आर कंपेयरिंग दी लॉस्ट कर्व डिस्ट्रीब्यूशन की हमारा भी वही है कि लॉट ऑफ स्मॉल क्लेम्स एंड मिनिमम लार्ज क्लेम्स, if if the curve has the same property या vice versa, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी कर्व से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दिस इज द थिंग। और लास्ट में दे हैव सेड कि ये तो तीन चीज करना ही है, बट इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, इफ द curves that we have with us all are inappropriate, उस केस में what we will do, we can either use another similar curve that was used in a similar exercise, we can adjust this to make more suitable, or construct our own curve. So these are the three options available to us in case all the curves which we have is not appropriate for the exercise. So this is the three things that you need to look at in order to know whether the curve you are using is appropriate or not. And if it is not appropriate, what you can do. Last, comment on whether or not curve C is likely to be appropriate for an exercise of this type by considering the shape of the curve in which only the total loss were possible. So
we have already discussed, if only total loss is possible, तो जो शेप ऑफ द कर्व होगा वो डायगोनल होगा, ठीक है, इन रिलेशन और इन कंपैरिजन विद दिस लाइन, जैसे जैसे लॉस साइज रिड्यूस होगा, ठीक है, जैसे जैसे लॉस साइज रिड्यूस होगा, कर्व वुड बल्ज आउट एंड बिकम कॉनकेव, तो ये कॉन्वेक्स कर्व है विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट कर्व. We have already discussed it. Let's see what they have written. Where only where the only type of loss is the total loss, any exposure curve must be the straight line y equal to gy. तो एक diagonal बनेगा. As we start to allow partial loss, the curve would now move above the diagonal and become concave. Hence, C is unsuitable because it lies below the diagonal. So this was original loss curve. इसमें we need to know the formula or the relationship between the original loss curve LEV and the expected value of phi, ठीक है. Whenever we will solve the question, जहाँ पे numerical question है, we need to know this relationship. The properties of LEV curve and the properties of this curve also, कि if it is closer to the diagonal line, then it says कि large claims का proportion ज़्यादा है in compared to small claims. And then प्रीमियम डिसाइड करने के लिए वी नीड टू नो कि कौन से लेयर के लिए वी हैव प्राइसिंग. अगर अट्रिशनल या स्मॉलर लेयर के लिए, प्राइमरी लेयर के लिए इफ वी आर प्राइसिंग, तो वी नीड टू सी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस बिटवीन देयर लेयर कितना है. जिस भी लॉस से प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी इन दैट लेयर ज़्यादा होगा, प्रीमियम उसी तरफ से ज़्यादा आएगा, ठीक है. Next is question 4. This is April 2011, question 3. It's asked us to describe the 5 module that is typically used in catastrophic model. So what is the 5 module in a cat model? So this is the mnemonic for the cat model. The modules in the cat model. H5. H stands for anyone? What is H stands for? Hazard model. F stands for financial analysis model. I stands for inventory or exposure model. V stands for vulnerability model. And E stands for event model. So this is the mnemonic H5: hazard model, financial model, inventory model, vulnerability model, and event model. One by one, starting from the event model, what is the description of event model? So event model is the database of the stochastic events that can take place along with different parameters
say physical parameter, location, frequency of occurring, likelihood, probabilities of occurring, like say. So the keyword over here is that it has a list of stochastic events with the likelihood or the probability of that happening. Okay. So this is the first module, event module. Then we have the hazard module, which gives us the consequence of the event happen. If the event happened, what is the consequence of it? Say अगर फ्लड आया तो फ्लड का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, व्हाट आर द लॉसेस or consequences of that event. So hazard model says the consequence of each event uh, within the location. ठीक है. उसके बाद इन्वेंट्री मॉड्यूल आता है. इन्वेंट्री मॉड्यूल ऑल्सो नोन एज द एक्सपोजर मॉड्यूल. दिस इज द डेटाबेस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इट्स एक्सपोजर, एक्चुअल एक्सपोजर. ठीक है. उसके बाद वी हैव vulnerability module. We combine the hazard model with the event model to come up with the vulnerability model. ठीक है. This this says us the degree of loss to a particular system from the exposure given a hazard has occurred. So degree of loss in the event of an hazard from the exposure model. ठीक है. तो hazard model और inventory model को combine करके we need to calculate कि क्या loss हो सकता है. तो vulnerability model से भी calculate that. And financial analysis model में this has the treaty, terms, condition, layer, exclusions, deductions, everything, the detail of those things, जिससे कि जो ग्राउंड अप लॉस है या टोटल लॉस है उसको वी कैन ट्रिम डाउन टू इंश्योर्स और द इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअल लॉस. ठीक है. So over here the financial model and the inventory model, these are the input required by the insurance company or the person who is running the model. ठीक है. Rest of the things are the part of the model. This is the input from the for the model, financial model and the inventory model. So remember H5, this is the 5 modules that we use in CAT model. Next is the question April 2011, question 6. This again is a question on CAT modeling only. What are the outputs of a CAT model and how we use it. So an insurance company is considering whether to write a property catastrophe reinsurance contract. When the contract exposure are run through a CAT model, the output in the table below are obtained. The CAT model allows for all the losses that can occur under the contract. The mean loss over here is this 1 million approximately. So this is also an output from the model, and we have two outputs, OEP and AEP. Firstly, what is the difference? What does OEP and AEP stands for? What is the full form of OEP and AEP? OEP is occurrence accidents probability, and AEP is aggregate accidents probability. So OEP deals with the probability कि individual loss will exceed the given loss limit, or AEP is for the aggregate loss within the time frame, within the period, maybe 1 year period. तो उसके अंदर में the total loss of from all the events would exceed this probability.
If I draw a curve like this, can you say which one is the OEP curve and which one is the AEP curve? Sorry, not a curve like this. Yeah. So which one is the OEP curve and which one is the AEP curve? This is the loss and this is the probability. A will be a the upper one AEP and B will be OEP. Correct. Because कोई भी एक इवेंट से लॉस होने का मतलब if we are saying कि ये 500k का लॉस है तो इंडिविजुअल इवेंट से 500k का लॉस होने का प्रोबेबिलिटी विल बी लोअर देन एन एग्रीगेट लॉस का मल्टीपल इवेंट्स के तो जो अपर कर्व है इज द एपी कर्व एंड द लोअर कर्व इज द ओईपी कर्व ठीक है नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन we have given some definitions gross premium net premium is net of brokerage and underwriting profit where underwriting profit is gross premium minus brokerage other expenses and claims ultimate claim so net premium basically gross premium less brokerage is net premium minus expenses minus claims ठीक है so this is the formula for underwriting profit underwriting profit UW profit ठीक है brokerage में they are saying कि it is 50% of gross premium and other expenses is 10% of net premium so brokerage is 15% of gross premium so net premium is gross premium minus brokerage or expenses 10% of net premium so expenses 10% of net premium ठीक है calculate the gross premium required to generate 90% probability of making an underwriting profit in the in any given underwriting year so how to proceed with this question So we can take the loss amount from AEP at 0.1 probability, uh, and using that amount, and we can assume gross premium as X and solve that equation. correct so यहाँ पे we have 90% probability of making profit तो 10% का जो लॉस का एपी प्रोबेबिलिटी है उस पे we have taken the loss amount what will be the loss amount if we have a 10% AEP aggregate exceedance probability the loss will exceed this level so we have the claim over here
363630. ठीक है. Now substitute all the values over here. The what would be the value? यहाँ पे since we have saying कि we need to make underwriting profit, तो we are assuming कि GP is equal to the like claims minus expenses, like sorry, claims plus expenses plus brokerage. So like the total premium charged and the total cost of selling and the claim cost is equal. So if we solve this, what would be the GP? So expenses are 10% of net premium and brokerage is 15% of gross premium. तो substitute कर दे यहाँ पे. Brokerage is 10% of 85% of gross premium and expenses. Sorry, this is expense and brokerage is 15% of gross premium plus 3630884. तो जीपी वाले कंपोनेंट को एक साइड लेकर के we can calculate the total GP. It will come to 4746254. Is that clear? Next, it is saying that the contract is priced to achieve an expected gross loss ratio of 50%. Calculate using linear interpolation the probability that the combined ratio is greater than 100%. So यहाँ पे जो प्राइसिंग ऑफ द पॉलिसी है वो इस तरीके से की गई है कि इट इज एबल टू अटेन अ 50% ऑफ लॉस रेशियो. ठीक है. तो वी नीड टू कैलकुलेट अगेन व्हाट वुड बी द प्रीमियम. सो सी यहाँ पे वी हैव यूज द expected loss from the cat model. If this is the expected loss, this is the loss ratio, loss by premium. So we have calculated the premium in relation to that. Then we have calculated the other components, net premium and expenses. Okay. Combined ratio is loss plus expense divided by the net premium. The combined operating ratio, we also call it as operating ratio, combined ratio. It goes by many names. So combined ratios we have calculated expense plus loss by premium. Expense we have यहाँ पे we are calculating the loss. Loss आ गया 1.667 billion approximately. अब aggregate accidents probability table से using interpolation we can calculate the probability कि what is the probability of getting this loss and that would be the probability कि हमारा जो combined ratio है would be 100%. So पहले तो हमने प्रीमियम निकाल लिया, नेट प्रीमियम, to calculate the combined ratio, combined operating ratio, and what is the probability कि ये 100% आएगा, उसके लिए हमें लॉस चाहिए because loss is the variable component over here. क्योंकि expense जो है it is fixed on the premium that we are charging
एक्सपेंस लॉसेस जो है वही वेरिएबल है, तो लॉसेस का अप डाउन की वजह से ही कंबाइंड रेशियो जो है वुड गो टू 100%। तो 100% कंबाइंड रेशियो के लिए कितना लॉस होना चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लॉस, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड रेशियो एक्सीडिंग 100% का प्रोबेबिलिटी, 100% का लॉस रेशियो। ये 1090 कहाँ से आया? So 1090 is the expected claim cost which we got from the CAT model, अच्छा, mean loss. Okay, got it. mean loss. Next, it is saying the insurance company underwriter requested the purchase of some retrocession protection for this contract. Protection is required against all events occurring less frequently than 1 in 150 years. Define the term retrocession and retrocedent. Simple. The next is estimate using linear interpolation the attachment point that the retrocession contract should have in order to meet the underwriter's requirement. So 1 in 150 years का probability चाहिए, ठीक है, तो 1 in 150 years कितना, what is the probability, and all event दिया है, so AEP कर्व में देखना है, so 1 in 150 is 1 is 0.0067. 0.0067. तो इन दोनों के बीच में आएगा 0.005 and 0.01. Will interpolate between this, and जो भी आएगा value of the loss, that would be the attachment point. Let's see what they have done. Proceed. 1 in 150 years 0.0067, and corresponding points के लिए we have interpolated, and loss would be 6.594 billion approximately. So this would be the attachment point. So this is a simple interpolation question. First we need to calculate the probability point, and then AAP curve से interpolate करके loss निकालते हैं. Is it clear? Any doubt in this question? Not, we can move ahead. Next question in line is question number 9. So this is April 2012 question 5. It states the factor to consider when selecting an increasing limit factor curve for pricing exercise. So पहले हमने original loss curve का देखा था. Now we have ILF curve का, increasing limit factors का. So what are the things that we need to check when we are picking up an ILF curve? So these are the things: whether the necessary assumptions are valid,
So there are two assumptions for ILF curve, that the loss frequency is independent of the limit purchased and the severity is independent of the number of loss and of the limit purchase. तो पहला तो frequency is independent of limit purchase, and then severity is independent of number of loss and limit purchase. But in real world scenario, this assumptions may not hold true because there is a deep pocket syndrome. The higher the limit purchase, the more likely the claim severity would be more, because the lawyers or the company target the insurance or the company those have higher insurance purchased. And court also tends to give more compensation to the victim if they know that the insurance in place with the company is higher and they are able to pay the losses. So in general or in real world, the severity is not at all independent of the limit purchase. But for ILF curve, we have these two assumptions. The next it says we need to check for the curve available, how up to date they are and the degree of adjustment required, the credibility of our own data for the firm in question, class of business being priced, coverage offered within the class, mix of business underwriting, the curve, jurisdiction in which the curve is sold, and treatment of ALAE and ULAE and other risk loading. So जो basically ये दो assumption तो है ही, और जो एक third assumption, common assumption we take for ILF curve is the ALAE का assumption. Generally जो ILF curve है वो doesn't include ALAE, मतलब वो pure loss cost का indemnity loss का curve रहता है. There is no ALAE included in the curve. तो सिंस उसका भी assumption रहता है तो we need to check the treatment of ALAE also कि ALAE का assumption कैसे किया गया है. Next we have nature of limit offered. तो per claim है कि per occurrence limit है. Effect of inflation, long term change in the claim environment, basis of cover provided, adjustment needed to the ILF absolute limit value, ILF curve used by other companies. So these are the things that we need to take care of, or we need to look for before picking up the ILF curve. Few things are specific to ILF curve, जैसे ये assumptions वाला, ठीक है, nature of the curve वाला. So these are the things which is particularly for ILF curve, and बाकी there is a general comment or maybe related to the portfolio that we are covering and the loss structure that we have, or the distribution of loss. Good. Now, this is the table, ILF curve A and B. These are the limits. We need to state how the claim distribution underlying curve A and B differ. The same question, original loss curve के लिए भी हमने किया था. How will the claim cost differ? The claim distribution differ between A and B. अगर इसका we build a curve, ये लिमिट है एंड ये ILF है, फैक्टर है. तो कर्व ए के लिए जीरो लिमिट पे जीरो है, ऐसे इंक्रीजेस समथिंग लाइक दिस. अब बी कर्व के लिए सेम लिमिट पे वी हैव अ स्मॉलर ILF, ठीक है.
इसमें भी कम है until it reaches 1, and then after this 2, 5, 10 के लिए if we see the curve B का point is higher. ठीक है, तो ये कर्व ए है, कर्व बी है, तो इस कर्व से व्हाट कैन यू से, what can you say about the claim distribution? सेम है ओरिजिनल लॉस कर्व के जैसे. यहाँ पे वी आर सेइंग कि बी में अगर आप ये देखो, ये लिमिट है, हायर लिमिट के लिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस इन कर्व बी इज मोर देन इन ए, और स्मॉलर के लिए बी में लेस है, ए में मोर है. तो कर्व बी assumes more large loss than small as compared to curve A. तो कर्व बी में लार्ज लॉस का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, more large loss it will project than smaller loss. Next, suggest reason why the claim distribution may vary by accounting firm or by accountancy firm. So, what would be the reason for difference between the claim distribution? Nothing to do with the ILF curve or the chapter. In general, why would the claim distribution vary between the accountancy firm? So we have already seen such kind of question. Let's see. The reasons why the claim distribution may differ by accountancy firm is policy insurance terms and conditions, size of the firm, type of client, size of contract, territory it operates in, quality of workforce, area of practice, risk management. So everything that will decide the cost or the loss is the reason why the claim distribution would differ between the accountancy firm. ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट, अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, लॉसेस कम होंगे, एंड इवन इफ इट ऑकर्स द cost of loss or the extent of loss would be less. Area of practice will define if we have different area of practice, so losses का probabilities will differ. Quality of workforce, territory it operates in, size of contract. अब first यहाँ पे सारे इंश्योरेंस से रिलेटेड we have. ठीक है, so we have already seen it multiple times. Next, it says the initial claim underlying the layer, the initial claim analysis of the layer 0.5 million excess 1 million gives an expected loss cost of this. The company wishes to obtain the loss cost of a higher layer using the ILF, derive using each curve separately the expected loss for 2 million excess 6 million layer. ठीक है, तो 1 million एक्सेस 1.5 मिलियन, मतलब 1 से 1.5 मिलियन के बीच का जो लेयर है, इसका जो एक्सपेक्टेड लॉस कॉस्ट है वो 250K है. तो 6 मिलियन से 8 मिलियन का जो लॉस लेयर है उसका लॉस कॉस्ट क्या होगा. ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट. First we will calculate the ILF of this layer.
So ILF of 1 million minus the ILF of 1.5 million. Yeah, 1.5 million minus 1 million. So what would be the ILF of this layer? पहले तो 1.5 million हमें निकालना पड़ेगा using interpolation. So what would be the ILF of 1.5 million? So this is the 50% point. तो 1 से 1 और 1.35 के बीच का जो middle point होगा, that will be the ILF. So 1.35 plus 1 by 2, this is the ILF, which gives us 1.175. So this is the ILF of 1.5 million. 1 million का ILF 1 है, तो इस layer का ILF will become 0.175. अगर इस ILF के लिए 250K का लॉस है, तो 1 वाले के लिए this would be the loss. और अब we need to calculate the ILF of 6 million to 8 million, जो कि 5 से 10 के बीच में आता है. 6 और 8 दोनों के लिए we need to interpolate. After interpolating 6 million, we will get 2.5 of ILF और 8 million के लिए 2.3. तो इसका डिफरेंस इज 0.2. तो इफ 1 के लिए दिस, तो 0.2 के लिए क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 0.2, we will get the expected loss cost of 2 million excess 6 million का layer. Is it clear what we are doing? We have a layer जिसका expected loss cost we know. So we will calculate the loss of the base layer 1 maybe, और उसके बाद इस लेयर का ILF को कैलकुलेट करके we can use this amount to calculate the expected loss cost of this layer. 2 million excess 6 million. यहाँ पे भी if we see they have done the same thing, but they have done it more technically. So they have 1.5 million का ILF, calculated the ILF for the layer. Similarly 6 और 8 के लिए ILF calculate किया, calculated the ILF for the layer. उसके बाद ILF of higher layer divided by the base layer. Base layer is the one जिसका हमारे पास loss cost available है, ठीक है, and we are calculating the ILF of the higher layer. So this is the calculation or the way that you want to represent your working. But what we have discussed is the thought process behind why we are doing this. कि लॉस बेस लेयर का लॉस दिया हुआ है, we divide it by the base layer to convert it to a full loss वाला thing, and then ILF of the higher layer से multiply when we do, तो next layer जो higher layer है उसका loss cost we can calculate. Similarly कर्व A कर्व B दोनों से we need to do. पहले में कर्व A से किया, कर्व B से बाद में करना है, तो दोनों कर्व से अलग अलग we need to calculate the loss cost. Is it clear? Any doubt in this question?
Next, we have question number 10, which is April 2012, question 8. Describe the feature of CAT excess of loss reinsurance. Again, a question from reinsurance chapter. What is the features of excess of loss reinsurance? What is the general structure excess of loss reinsurance के लिए what we will write? The specifics है excess of loss का we write about indexation, we write about working layer. ठीक है, ये सब चीज excess of loss में how do we share the premium losses, how do we calculate the premium basically, वो सारी चीजें लिखनी होती है. Let's see what they have written. So it's a non-proportional reinsurance, a form of aggregate excess. अच्छा, cat excess of loss बोला तो it's an aggregate excess. So cat excess of loss में again our clause आ जाएगा. Written on a treaty basis, usually renewed annually. Reinsurers pay amount above the excess up to a specified limit, used for very high aggregate loss, cover an accumulation of losses due to a specific claim event, event length limit by our clause, cedent choose the point of start of the period. Insurer will usually have a stack of layers, maybe reinstatement, excess point, and upper limit are indexed. तो क्या excess of loss वाला जितना भी था, indexation, reinstatement, stack by layer, proportional, can be written in treaty, renewal, तो ये सारी चीज तो लिखा ही है. साथ में एग्रीगेट वाला भी लिखा है कि एग्रीगेट एक्सेस ऑफ लॉस होता है. इस 3 में वी हैव written the definition, our clause, and who decides on the starting point of the our clause. So ये 1 2 3 4 5 ये सारे पॉइंट्स आर दी स्पेसिफिक पॉइंट्स फॉर कैट एक्सेस ऑफ लॉस. बाकी इट इज अ जनरल आंसर फॉर एक्सेस ऑफ लॉस आल्सो, एंड जनरल आंसर फॉर एनी reinsurance type कि वेदर इट इज प्रोपोर्शनल नॉन प्रोपोर्शनल ये लिखना है, कैन बी रिटन इन ट्रीटी नॉन ट्रीटी ये लिखना है, एनुअल तो सारे ही रहते हैं जनरली वो लिखना ही है. कोटा शेयर होगा तो वी नीड टू राइट अबाउट द स्प्लिटिंग द लॉसेस एंड प्रीमियम इक्वली. ठीक है, तो वो सब चीजें वी नीड टू राइट. Next, we have state why an insurer might buy this type of reinsurance. Again, very simple. Why will we buy cat excess of loss? उसका लिखना है accumulation and limiting, smoothing, all other things related to reinsurance buying. Let's see what they have written. So they have written increase the. तो एकदम कॉमन आंसर है री-इंश्योरेंस वाले चैप्टर का ये है, नथिंग रिलेटेड टू कैट एक्सेस और मतलब कैट मॉडल है ना. इंक्रीज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द रिस्क, improve solvency margin, mitigate concentration risk, smooth profit, reduce volatility, may be cheaper than alternatives, may be required by the regulator, improve financial strength. तो जितना भी reasons for buying an insurance reinsurance है that we have written over here. Good. Now we have this data available. It says the insurance company writes cat excess of loss. The relative merits of the two different contracts for the same cedent needs to be investigated. The cedent has given an output from the cat model.
The output shows stochastically generated event, losses to the seedent, and the year in which the loss has occurred. So we have this output from the cat event. तो event का नाम लिखा हुआ है, years लिखे हुए हैं, and losses to the seedent दिया है. ठीक है. We need to suggest the question that we need to ask the seedent about the output. Again, this is also a question that could be used as a model to answer any question about the cat modeling. जब भी cat model आएगा कि there is a cat model and we need to ask about the or ask the company or the seedent यहाँ पे जैसे है about the output, तो उसमें what all do we need to write. So first, has a proprietary और इन हाउस मॉडल being used. तो मॉडल जो यूज हुआ वो प्रोप्राइटरी मॉडल है कि इन हाउस मॉडल है जो कि स्पेसिफिक उन्होंने बनाया है. The type of model and which version of the model has been used, what is the model assumption and how often have they updated, mathematical approximation that are used in the model, secondary uncertainty model or not. ठीक है. What are the key areas of uncertainty in the model? Perils that are modeled, territories that are modeled, exposure complete and up to date है कि नहीं है? To what extent will the exposure change over the period cover? Are losses net or gross of reinsurance? What options are turned on? Example, demand search. How is year defined? Underwrite year, accident year, period, calendar year है, financial year है. What are the definition of events? Event में देखोगे कि नंबर ही दिया हुआ था सिर्फ. अगेन ये दो तीन यहाँ पे जो क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड पूछ रहे हैं, दिस इज स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन, विल डिपेंड कि क्वेश्चन पे इवेंट के लिए एम्बिग्विटी है कि नहीं है. यहाँ पे जो ये लॉस वाला है, वेदर इट इज नेट और ग्रॉस, दैट आल्सो डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. ठीक है. Whether it is ground up loss or capped, ठीक है. Whether the amount is pure indemnity or not, currency conversion rate has been used or not, has an hour clause been allowed for or not. So these are the questions that we ask for any cat model. Next, we need to calculate the contribution for each layer. So दो layer we have. One is 5 million excess 10 million, other is 20 million excess 10 million. 5 तो 10 से लेकर के पहला वाला 15 है, दूसरा वाला 10 से लेकर के 30 तक का लेयर है. एंड दे हैव सेड कि वन फ्री रीइंस्टेटमेंट वी हैव. ठीक है. तो ईच ईयर वन फ्री रीइंस्टेटमेंट है. तो अब लेयर 1 1 एंड 2. ठीक है. ईयर्स वी नीड टू कीप इन माइंड कि ये जो ये फर्स्ट 4 क्लेम्स है दैट कम्स फ्रॉम वन इवेंट 1 ईयर. Next 4 claims जो है that is coming from 1 year. We need to keep in mind in order to use the reinstatement. पहला layer से if we start, what would be the loss for first? What would be the contribution for first loss? Layer 1 में 10 million excess 15 million है. Sorry, 5 million excess 10 million है. तो 10 से 15 का we are doing. तो 5 million का लिमिट यहाँ पे रीच हो जाता है. तो we have exhausted the limit. Now we will reinstate one reinstatement done. हमारे पास अगेन 5 मिलियन का लिमिट आ चुका है. नेक्स्ट 2 क्लेम्स में इट इज 3.5 मिलियन एंड 0.3 मिलियन. अटैचमेंट ही ब्रीच नहीं हुआ है.
zero recoveries. Next is 13.1 million, 10 million से excess है तो 3.1 million we will pay. लेस देन 5 million है तो पूरा 3.5 million 3.1 million पे करेंगे. एंड अब जो लिमिट है वो बचा है कितना, 1.9 मिलियन का. ठीक है, फॉर दिस ईयर 1.9 मिलियन का ही बचा बिकॉज वी डोंट हैव एनी फर्दर री इंस्टेटमेंट. बट इस ईयर का और कोई लॉस भी नहीं है तो वी आर फाइन विद इट. सेकेंड ईयर के लिए इफ वी स्टार्ट 15 मिलियन है. अगेन फर्स्ट लॉस में 5 मिलियन का लिमिट ब्रीच हो जाता है. री इंस्टेटमेंट डन, 5 मिलियन का कवर वापस आ गया है. नेक्स्ट 50 मिलियन का लॉस है. 10 से 15 में अगेन 5 मिलियन का लिमिट ब्रीच हो जाएगा तो 5 मिलियन ही पे करेंगे. नाउ 5 मिलियन एग्जॉस्ट हो गया, नो री इंस्टेटमेंट. अब जो बच रहा है कवर जीरो, नो कवर. हमारे पास अब कोई कवर नहीं है. थर्ड लॉस में 32 मिलियन का लॉस है, ग्रेटर देन 10 मिलियन बट नो लिमिट रिमेनिंग तो रिकवरी होगा जीरो. वो अब फोर्थ वाला ऐसे भी जो है लेस देन एक्सेस है तो जीरो. तो सेकेंड ईयर में 10 मिलियन का रिकवरी हुआ और थर्ड ईयर में एक ही क्लेम है, 1.3 मिलियन का रिकवरी वी विल डू. तो टोटल रिकवरी हुआ है लेयर वन पे 5, 10, 15, 16, 19, 19.4 मिलियन का. ऑल्दो हमें यहाँ पे लिखना है लॉसेस फॉर ईच लेयर फॉर ईच ईयर. तो वी विल राइट इट बाय दिस कि 467, 467, 468 एंड 469 में 467 में 8.1 मिलियन का है, इसमें 10 मिलियन का और इसमें 1.3 मिलियन का. ये हो गया लेयर वन का. अब लेयर टू का यू ऑल कैलकुलेट कि व्हाट वुड बी द रिकवरी. फाइनल बताना कि ईयर 467, 468 एंड 469 में क्या रिकवरीज होगा. क्विकली ईयर वन का क्या है. अब यहाँ पे भी हैव 20 मिलियन का एक लिमिट. ठीक है, तो फर्स्ट लॉस जो होगा उसमें 10.3 मिलियन का कंट्रीब्यूशन होगा. अब 20 मिलियन का लिमिट है, 10.3, 10.3 मिलियन री इंस्टेट हो गया. अभी भी 9.7 मिलियन का री इंस्टेटमेंट बच रहा है. ठीक है, इसमें इसमें नो रिकवरी और इसमें 3.1 मिलियन का रिकवरी हुआ तो 3.1 मिलियन भी यहाँ से कम हो जाएगा. 6 पॉइंट. तो नाउ वी हैव 20 मिलियन का लिमिट एंड 6.6 मिलियन का री इंस्टेटमेंट रिमेनिंग विद अस. बट कोई लॉस, वी डोंट हैव एनी अदर लॉस, so we don't need to worry about what is the limit remaining or what is the cover we have. सेकेंड ईयर के लिए 15 मिलियन है. अगेन 5 मिलियन रिकवर होगा, 10 मिलियन से एक्सेस. सेकेंड में 50 मिलियन का लॉस है, 20 मिलियन का लिमिट ब्रीच हो जाएगा. यहाँ पे हमने 5 मिलियन यूज कर लिया, यहाँ पे हमने 20 मिलियन यूज कर लिया. तो नाउ वी हैव ओनली 15 मिलियन का
limit remaining and no further reinstatement also. तो 32K में we have 22 का loss, but 15 million का ही cover बच रहा, तो 15 million would be the one that we will be able to recover. और fourth वाले में recovery नहीं बनेगा because it is below the excess. और again last वाले में 1.3 remains same. Actually, I have a question here. आपने मिलियन के बाद 20 मिलियन कैसे लिखा? इसमें 15 मिलियन बचा है ना, क्यों 15 मिलियन लिखेंगे ना? So if you remember कि reinstatement का जो concept होता है, that is immediately after a claim has been paid. तो 5 मिलियन का क्लेम जैसे ही पे हुआ, वैसे ही वापस से 5 मिलियन रीइंस्टेट होकर के जो लिमिट है वो 20 मिलियन पे रीच हो चुका है वापस. तो जितना लिमिट भी एग्जॉस्ट वो इमीडिएटली रीइंस्टेट हो जाता है. ऐसे नहीं कि पूरा 20 मिलियन कवर करने के बाद में अगेन 20 मिलियन यू विल गेट. अगर 1 मिलियन का भी रिकवरी हुआ, मे बी 1K का भी रिकवरी हुआ, तो 1K का रीइंस्टेटमेंट तुरंत हो जाएगा. तुरंत हो जाएगा. ओके. तो 5 मिलियन का जैसे ही हमें यहाँ पे रिकवरी हुआ, रीइंस्टेट हो गया वापस 5 मिलियन. अब रीइंस्टेटमेंट से 15 मिलियन का बच रहा है और लिमिट हमारे पास 20 मिलियन का इंटैक्ट है. तो लिमिट हमेशा 20 मिलियन का इंटैक्ट होना चाहिए अनलेस वी डोंट हैव एनी रीइंस्टेटमेंट ओनली. जैसे लास्ट केस में रीइंस्टेटमेंट ही नहीं बचा था, तो उस पे लिमिट हमारा कम हो गया था 15 मिलियन पे. तो अगेन इसका 8.140 एंड 1.3. So this is the loss that we have. Okay, sorry, not 8.1, 13.1. 13.4, 9.3, 3.5. So these are the losses by the year using one free reinstatement. Reinstatement में I have seen many a times people are making this mistake. ये ध्यान रखना हमेशा reinstatement immediately after a claim हो जाता है. You don't have to wait until the entire limit has been exhausted. और जनरली जितना लिमिट एक्सपायर होता है, जितना रीइंस्टेटमेंट हमने किया होता है, यूज किया होता है, उतने के लिए ही वी आर पेइंग द प्रीमियम आल्सो. एंड समटाइम्स जितना रिस्क का एक्सपोजर बच रहा है वो प्रोपोर्शन के लिए भी प्रीमियम चेंज हो जाता है. मे बी कि 100 मिलियन का प्रीमियम है या 100K का प्रीमियम है, मिडल ऑफ द ईयर में आकर के वी हैव यूज्ड और लिमिट जो है हमारा 1 मिलियन का है. दिस इज द लिमिट, दिस इज द प्रीमियम एंड वी हैव एग्जॉस्टेड 500K का यहाँ पे. तो वी आर रीइंस्टेटिंग 500K एंड मिडल ऑफ द ईयर में आ गए तो हाफ ईयर के लिए रीइंस्टेट कर रहे हैं. तो 50% और 50% ऑफ 100K, तो 25K would be the reinstatement premium. जनरली ये होता नहीं है. If the question says कि टाइम के लिए भी we are proportioning, तो we will do. Otherwise टाइम के लिए we don't proportion, we only proportion for the limit or the reinstatement का proportion that has been used. पूरा ही प्रीमियम भी पे. But if the question says the reinstatement is done for the remaining period only proportionally, so we will need to apply that. But reinstatement will happen immediately. Next, we have carry out the exercise on the full event set produced and full event set produced annual average annual loss. So average annual loss of layer 1 and layer 2 दिया हुआ है. We need to first calculate the loss ratio and then we need to calculate the loss ratio of another layer. तो loss ratio कैसे calculate करेंगे? Expected annual cost तो दिया हुआ है. What about the premium? Premium के लिए we will use the information in the previous part. Rate in line.
फर्स्ट वाले के लिए 20% रेट इन लाइन है एंड सेकेंड वाले के लिए 12% रेट इन लाइन है। तो जितना भी लिमिट है उसका 20% एंड 12%। सो दिस इज द प्रीमियम फॉर इंडिविजुअल लेयर 1 एंड लेयर 2। लॉस हमें दिया हुआ है, लॉस रेशियो वी कैन कैलकुलेट इजीली। नेक्स्ट स्टिल इट इज सेइंग द इम्प्लाइड लॉस रेशियो ऑफ लेयर 15 मिलियन एक्सेस 15 मिलियन। तो पहला लेयर जो हमारा था वो था 10 मिलियन, 5 मिलियन एक्सेस 10 मिलियन, तो 10 से 15 वाला। नेक्स्ट जो हमारा लेयर था वो था 10 से 30 वाला, यहाँ पे 20 मिलियन का लिमिट कवर कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, जो तीसरा है वो है 15 मिलियन एक्सेस 15 मिलियन, तो 15 से 30। तो इफ यू विल सी इट इज सेकेंड लेयर माइनस द फर्स्ट लेयर। अगर सेकेंड लेयर माइनस फर्स्ट लेयर करेंगे तो जो थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन में है 15 एक्सेस 15, उस लेयर का वी विल गेट द लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे भी वी नीड टू डू द सेम, कि जो लॉस कॉस्ट है सेकेंड लेयर और फर्स्ट लेयर का उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो प्रीमियम होगा सेकेंड लेयर और फर्स्ट लेयर का उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो लॉस फॉर दिस लेयर न्यू लेयर मिल जाएगा, प्रीमियम फॉर दिस न्यू लेयर मिल जाएगा, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द लॉस रेशियो। एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस, यहाँ पे क्योंकि बोला है assume that the price is constant within the layer 1 and layer। since constant है so we can use this relationship। Next it says suppose that the reinstatement premium are charged to be paid at 50% of the original premium। Describe how to derive the revised rate online for layer 1 to obtain the same uh, expected loss ratio। यहाँ पे अगर सेम एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो लेना है तो वी नीड टू कैलकुलेट द रिवाइज्ड रेट इन लाइन। सो लेट्स सी, सिंस एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो सेम है, एक्सपेक्टेड लॉस भी सेम है, तो प्रीमियम चेंज होगा, व्हाट आई फील। लेट्स सी, द एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो टू expected total loss to the contract is unchanged, hence the new premium for layer including expected reinstatement premium must be the old premium। ठीक है, the premium for the layer excluding reinstatement premium is this, where R is the rate in line। तो 5 मिलियन का लेयर था, रेट इन लाइन मल्टीप्लाई करके हमारा प्रीमियम कैलकुलेट हो रहा था। अब जो पुराना प्रीमियम 1 मिलियन का था, सिंस वी नीड टू मेंटेन द लॉस रेशियो आल्सो, और एक्सपेक्टेड लॉस जो है टोटल लॉस वो चेंज नहीं हुआ है, तो अब जो टोटल प्रीमियम है इंक्लूडिंग द रीइंस्टेटमेंट प्रीमियम दैट शुड बी इक्वल टू 1, which is initial premium plus the reinstatement premium। ठीक है, अब तो जो टोटल प्रीमियम है वो अगेन 5 इंटू रेट इन लाइन मल्टीप्लाई करके ही कैलकुलेट होगा, और जो रीइंस्टेटमेंट प्रीमियम है वो 50% ऑफ रेट इन लाइन जो है हमारा प्रीमियम वो है। अब इसके लिए व्हाट दे हैव सेड कि एक्सपेक्टेड अमाउंट of cover that will be reinstated is 1 by n and sum of ri's, where n is the number of years in event set and ri is the model amount of cover that needs to be reinstated in year I। so what are we doing, यहाँ पे हमने expected
कॉस्ट ऑफ री स्टेटमेंट निकाल लिया, मतलब कि अगर मान लो वी हैव 3 years का डेटा 467 468 469 का, तो नंबर ऑफ ईयर्स 3 हो गया। री स्टेटमेंट कितना हमने किया है ईच ईयर का वो लेंगे सम, तो हमें एवरेज री स्टेटमेंट पता चल जाएगा ईच ईयर का। Hence, the expected value of reinstatement premium is 50% of reinstatement cost into कितना हमने reinstate किया है proportion। अब इक्वेट कर दिया हमने ओल्ड के लिए 1 which was 1, तो अब we can calculate the rate in line। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो हमने 5 मिलियन लिया था, 5 मिलियन के जगह में एक्चुअल जो हमारा एक्सपेक्टेड रीइंस्टेटमेंट है वो लेंगे, क्योंकि एज वी हैव डिस्कस्ड रीइंस्टेटमेंट जितना किया है उतने के लिए ही हम प्रीमियम पे करते हैं। इफ वी हैव एग्जॉस्टेड मे बी 50% ऑफ द रीइंस्टेटमेंट, मे बी 50% हमने लिमिट का रीइंस्टेट कर लिया, तो जो हमारा प्रीमियम हो जाएगा वो हो जाएगा 0.25 ऑफ द रेट इन लाइन। करेक्ट? Is it clear? Any confusion in this one? How have we calculated the rate in line, or what do we actually needs to calculate, ये भी clear है क्या? कि पहले रेट इन लाइन था हमारा 20%, अब सिंस री स्टेटमेंट भी आ गया और टोटल प्रीमियम भी हमें 1 मेंटेन करना है, तो न्यू रेट इन लाइन क्या होगा? इट विल ऑब्वियसली रिड्यूस। So moving to the next question, then we have time 15. Cool. 15 is also similar जो हमने पहले किया था ILF के लिए। It is saying the insurance company is pricing a risk excess of loss treaty that covers third party liability of mobility scooters, ठीक है, on large book of household insurance. The mobility scooters are single occupant electrically powered vehicles that are intended for people with impaired mobility to travel short distance outside the home but are not classified as motor vehicle. The mobility scooter cover is only provided under the content section of the household insurance, and policyholder are not required to disclose at the time of proposal how many mobility scooters they own। ठीक है? अब उसके बाद में they are saying कि the reinsurance cover is 9 million excess 1 million. The reinsurance company decide to use the exposure from the content section only as the measure of exposure for the pricing of the mobility scooter cover। तो जो भी एक्सपोजर सिर्फ कंटेंट ओनली, जो कंटेंट वाला पार्ट का होगा ना, उसका ही एक्सपोजर वी विल यूज फॉर मोबिलिटी स्कूटर। तो एक्सपोजर के लिए क्या दिया है डेटा हमारे पास कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पॉलिसीज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, कंटेंट इंश्योरेंस का जो कंटेंट सेक्शन है उसका प्रपोर्शन 83% है। New policies written within the year is 19K and policies that have cancelled within the years is 9,000K, 9,000, ठीक है, 19,000 9,000। अब अगेन लास्ट yesterday भी क्वेश्चन था कि हाउ वी विल नो कि इंटरपोलेट करना है कि नहीं एक्सपोजर को। अगेन यहाँ पे वी हैव information about the exposure at the start of the year, we have some addition and some subtraction within the year. So first we will
कैलकुलेट द एक्सपोजर एट द एंड ऑफ द ईयर, और मे भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इन लोगों ने डायरेक्टली किया है, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी विल डू कि एक्सपोजर एट द एंड ऑफ द ईयर निकाल लेते हैं। 288280 है। अब इसमें 19 के अगर प्लस हुआ है और 9 के माइनस हुआ है तो 10 के प्लस हो गया, तो नया हो गया है 298280। अब स्टार्ट ऑफ द ईयर में अगर ये एक्सपोजर है, एंड ऑफ द ईयर में ये एक्सपोजर है, तो क्या हमें क्या करना होगा, हमें जो एवरेज पॉलिसी इंसेप्शन डेट है उस डेट पे जो एक्सपोजर है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एवरेज पॉलिसी इंसेप्शन डेट, सिंस नथिंग हैज बीन गिवन, वी विल मेक आवर असम्पशन कि एनुअल पॉलिसी है, risk is earned evenly throughout the period, policy incepts evenly throughout the period, वो तीनों assumption ले करके मिडल ऑफ द पॉलिसी ईयर, और यहाँ पे कैलेंडर ईयर ही होगा, मे बी स्टार्ट ऑफ द ईयर लिखा है, तो 50% पे हम कैलकुलेट कर देंगे कि 50% ऑफ द टाइम पे क्या हमारा एक्सपोजर है। ठीक है, तो जब भी इंटरपोलेशन करना है, तीन अजम्पशन भी बनाना है एंड देन इंटरपोलेशन करना है। इंटरपोलेशन क्यों कर रहे हैं? टू कैलकुलेट द एक्सपोजर ऑन द डेट ऑफ द पॉलिसी इंसेप्शन डेट, तो एवरेज पॉलिसी इंसेप्शन डेट पे जो एक्सपोजर है वो कैलकुलेट करना है। एंड यहाँ पे सिंस स्टार्ट और एंड वाला कॉन्सेप्ट है, हमें एवरेज निकालना पड़ेगा कि पॉलिसी इंसेप्शन डेट पे क्या एक्सपोजर था, तो वी विल कैलकुलेट दैट। Next, we have the reinsurer estimate that the loss cost to the mobility scooter treaty per content section year is 1.5% of the expected cost per vehicle year for specific third party। तो जो भी थर्ड पार्टी मोटर लाइबिलिटी का कॉस्ट है उसका 1.5% जो है ना वो मोबिलिटी स्कूटर का होगा। ठीक है, the reinsurer use the following ILF curve to adjust the mobility motor liability treaty। ठीक है, अब यहाँ पे we have been given the information कि 5 million एक्सेस 5 million का जो लेयर है ऑफ द मोटर लाइबिलिटी ट्रीटी, उसका जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो 6 million का है। हमें कैलकुलेट करना है कंटेंट इंश्योरेंस सेक्टर का 9 से 9 million एक्सेस 1 million का लॉस। तो हाउ विल वी डू दिस? पहले तो हमें जो मोटर लाइबिलिटी है उसका 9 मिलियन एक्सेस 1 मिलियन का कवर का एक्सपेक्टेड लॉस कॉस्ट निकालना होगा। 6 मिलियन हमें इस लेयर का दिया हुआ है, तो इस लेयर का आईएलएफ कैलकुलेट करेंगे। 6 मिलियन से हम डिवाइड, मतलब 6 मिलियन डिवाइडेड बाय दैट आईएलएफ कर देंगे, मल्टीप्लाइड विद द आईएलएफ ऑफ द एक्सेस लेयर। तो हमारा फॉर्मूला जो था आईएलएफ ऑफ हायर लेयर बाय आईएलएफ ऑफ बेस लेयर मल्टीप्लाइड विद द कॉस्ट ऑफ बेस लेयर या एक्सपेक्टेड लॉस कॉस्ट ऑफ बेस लेयर। ठीक है, तो ऐसे वी विल कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस कॉस्ट ऑफ मोबिलिटी स्कूटर फॉर दिस लेयर। अब हमें पता है कि जो कंटेंट है उस कंटेंट सेक्शन वाले का 1.5% है, तो 1.5%, 1.5 मल्टीप्लाई कर दो परसेंट, तो वी विल गेट द लॉस ऑफ मोबिलिटी स्कूटर का 9 मिलियन एक्सेस 1 मिलियन लेयर का कॉस्ट। ठीक है, अगेन ये पर व्हीकल ईयर है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा एवरेज एक्सपोजर से। व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दैट रेट विद द एवरेज एक्सपोजर, तो हमें टोटल लॉस कॉस्ट मिल जाएगा फॉर कंटेंट सेक्शन और मोबिलिटी का जो व्हीकल है उसका लॉस। ठीक है, इज इट क्लियर? लेट्स सी देयर कैलकुलेशन एज वेल। अच्छा, 15 नंबर क्वेश्चन। अगेन assumptions देखो, दो तीन assumption आईएलएफ कर्व के बनाए हैं। सबसे पहले लॉस फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट परचेज, सिवियरिटी इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ लॉस एंड द लिमिट परचेज,
treatment of ALAE and ULAE under the scooter liability treaty is consistent with the treatment of mobility ये motor liability treaty. ILF do not needs to be adjusted for claim inflation. Policies are written halfway through the treaty year. अब ये हमने चालू कर दिया है exposure का assumption बनाना. Cancellation occurs halfway through the year. ठीक है. 83% of the new policy and cancellation policy have a content insurance. और फिर exposure of the mobility cover calculate कर दिया. ठीक है. यहाँ पे you can also write annual वाला और जो हमने risk वाला लिखा था, there is no harm writing extra assumptions. ठीक है. Exposure calculate कर लिया है. We have calculated the ILF of higher layer by base layer multiplied with the base layer का loss. We have got the 9 million excess 1 million का motor insurance का loss multiplied with 1.5%. Content section का 9 million excess 1 million का loss मिल गया per policy year multiplied with the exposure to get the mobility scooter का total loss. ठीक है. We have got this total loss. अब next हमें calculate करना है yes premium. Yes, reinsurance premium calculate करना है. उसके लिए we have commission, expense, capital requirement, required return on capital and minimum rate in line. तो सबसे पहले क्या करना है, मिनिमम रेट इन लाइन है ना, वो कैलकुलेट कर लेने का है. 9 मिलियन हमारा लिमिट था, 3% का मिनिमम रेट इन लाइन है, तो 2.7 मिलियन का जो है हमारा प्रीमियम बनेगा इसका. सॉरी 2.7 मिलियन 0.27 राइट. सही है. गलत है. कैलकुलेट भी करना. करेक्ट. तो 0.27 मिलियन का हमारा मिनिमम प्रीमियम है. अगर कैलकुलेटेड प्रीमियम इससे कम आएगा तो हम ये चार्ज करेंगे, अगर इससे ज्यादा आएगा तो वो चार्ज करेंगे. ठीक है. अब कमीशन दिया है, यहाँ पे री इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ है, बट हमारा बिजनेस ही री इंश्योरेंस का है, तो दिस इज आर नॉर्मल प्रीमियम ओनली. तो जो कमीशन है वो 20% ऑफ प्रीमियम है. एक्सपेंस जो है दिस इज 15% ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस कॉस्ट, जो कि हमने ऊपर निकाल रखा है. ठीक है. एक्सपेक्टेड लॉस कॉस्ट. ठीक है. ELC लिख देते हैं फॉर नाउ. नेक्स्ट, ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन कैपिटल है ना, दिस इज द ट्रिकीएस्ट वन. अब इसमें बताओ कि कैसे करना होगा. ये हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट भी दिया गया है जो कि 77% ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन कैपिटल दिया हुआ है विच इज 12% ऑफ द कैपिटल. तो इसको कैसे ऐड करना है, जैसे कि प्रीमियम पे एक्सपेक्टेड लॉस कॉस्ट प्लस कमीशन प्लस एक्सपेंस तो कर देते हैं, आगे क्या प्लस करना है. That will be, I think, 0.12 multiplied by 0.77 multiplied by the premium P, and I think, yeah, that's it. Or I think we should also make an assumption of premium which we will be earning over the year. मतलब मिडल ऑफ द ईयर वाला हो सकता है शायद. तो यहाँ पे इट इज करेक्ट कि 12% मल्टीप्लाइड बाय 77% मल्टीप्लाइड बाय द प्रीमियम. बट व्हाई आर वी डूइंग दिस, क्योंकि इसको एज अ कंबाइंड एक देखो, दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंपोनेंट. दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगर रिक्वायर्ड कैपिटल है और उस पर रिक्वायर्ड रिटर्न है, तो वही तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, कि ये रिटर्न होल्ड करने के लिए अगर शेयर होल्डर्स इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दिस कैपिटल. तो ये इन टोटल जो है, ये लास्ट पार्ट हमने ऐड किया, दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट, जो टीसीपी
राइस में जो हमारा पी होता है, प्रॉफिट मार्जिन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वो है कमीशन, एक्सपेंस एंड पी, ये तीन चीज हमने ऐड किया। ठीक है, लेट्स सी। assumption, no retrocession, ignore investment income, no loading, return on capital is calculated on a 1 year time horizon। ठीक है, तो अदर चीज जो हमने इग्नोर कर दिया टीसीपी राइस का, वो हमें उसके लिए assumption लेना है, नो इन्वेस्टमेंट इनकम, नो री इंश्योरेंस, सिंस री इंश्योरर हम खुद ही है तो रेट्रोसेशन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, टैक्स के लिए भी लिख सकते हैं, नो नो टैक्स रेट। नो अदर लोडिंग, तो अदर लोडिंग जो हमारा कंटिजेंसी मार्जिन वाला जो पार्ट है उसके लिए है। तो बेसिकली जितना भी टीसीपी राइस का कंपोनेंट हमने यहाँ पे नहीं लिया है उसके लिए assumption बना लिया है। तो कैपिटल लोडिंग यहाँ पे देखो, ये इन लोगों ने भी कैपिटल लोडिंग ऐड किया है विच इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला पार्ट। बाकी तो सिंपल है, वी कैलकुलेट द री इंश्योरेंस प्रीमियम। अब मिनिमम रेट इन लाइन 270 के था, since the actual premium that we have calculated is less than the minimum rating line, so we will charge the minimum rating line. Is it clear? Any doubt, problem in this? ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, हमने जो पहले कैट मॉडल के लिए किया था। यू कैन ट्राई इट एट होम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वन क्वेश्चन। ये, so this is the question, the full fledged question on original loss curve। तो यहाँ पे we have September 2019 question 6। An actuary writes, an actuary working for an insurance company is pricing risk excess of loss treaty business है यहाँ पे। ठीक है, to cover an insurance company that writes commercial property business, the cedent has provided the following risk profile from its book of business and in the form of a table of total original premium by some insured band। ठीक है, तो by some insured band we have the original premium that was charged by the insurance company। अब we have another assumption and loss ratio कि 55% का loss ratio है। ठीक है, for all figures we have been and all figures have been adjusted for inflation trend। तो since inflation trend के लिए all figures has been adjusted, जो हमारा starting point रहता था कि जो limits and attachment को we use to deflate, वो नहीं करना अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे assumption दे रखा है कि adjustment for inflation trend has been provided in the data only। तो हमें लिमिट्स को अब नहीं एडजस्ट करना है। ठीक है, we have the original loss curve, we need to calculate the loss cost for this layer 400K excess 100K। ठीक है, तो ये हमारा लेयर है जो हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहता है ओरिजिनल लॉस कर्व में। अपर लिमिट इज 500K, लोअर लिमिट इज 100K। ठीक है, तो एवरी लॉस बैंड का पहले तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे लेयर्स पे कितना ब्रीच हो रहा है। ठीक है, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल लॉस कर्व से वी नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। लेट्स सी द वर्किंग।
उसके बाद assumptions इसका बहुत important है. We will see their assumption also and the master assumption list also कि क्या क्या assumption we can make original loss curve के लिए. तो यहाँ पे what they have done, sum insured है, average sum insured they have calculated. ठीक है. अब 25 है, 25 के we have 10 से लेकर के 50 का. एक second. तो यहाँ पे इन्होंने x लिया, but I would say that you all take it as m, which is the general notation for the sum insured, or y is equal to x by m we calculate, right? तो m लेने से confusion कम होगा. तो limit divided by the sum insured we are calculating, इसमें 100% हो गया. We have calculated the y point and corresponding gy we have calculated. Now प्रीमियम गिवन है, लॉस जो है 50% पे 55% पे अज्यूम्ड है, तो लॉस निकाल लिया फॉर दैट लेयर. कॉरस्पॉन्डिंग जी वाई पॉइंट्स है हमारे पास में. वी हैव कैलकुलेटेड द लॉस फॉर द लेयर मल्टीप्लाइड विथ द टोटल कॉस्ट फॉर द लेयर. तो हमारे पास आ गया है लॉसेस फॉर आर 100K, सॉरी 400K एक्सेस 100K का लेयर. दिस इज द लॉस कॉस्ट divided by the premium, or this total original premium that was charged. तो 1.5 का रेट जो है हैज बीन डिसाइडेड, मतलब कैलकुलेट करने पे 1.7 का रेट आ रहा है, रेट इन लाइन. इज इट क्लियर? दिस वन इज ये समझ नहीं आया पॉइंट, मतलब जो दिस वन द अटैचमेंट पॉइंट परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, दिस वन. ये वाला. हाँ, good. मतलब ये तो आ गया, ये दो तो आ गए. थर्ड पॉइंट इज जी वाई हम्म. एंड जी जी, जो है हम्म. थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, ये दे रखा है क्या अपन को क्वेश्चन में? हाँ, ये तो दे रखा है ना, ओरिजिनल लॉस कर्व है तो हमारे पास. ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दीज टू पॉइंट्स, द मिडल वन जो थे वो बनाए थे? वो वो वाई कैलकुलेट करना है ना. ओरिजिनल लॉस कर्व कैसे होता है? वी हैव अ वाई पॉइंट जो कि x डिवाइडेड बाय m है. ठीक है. वी आर वर्किंग ऑन अ रेशियो टर्म्स. ठीक. इसीलिए ओके. जो है वी आल्सो से कि y इज इंडिपेंडेंट ऑफ m. तो हाँ. फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड y, और उस y के लिए जी वाई कैलकुलेट कर लिए, विच इज द लॉस्ट का लेयर. ओके. दिस इज y जी वाई. तो एवरी पॉइंट उसके अगेंस्ट में यहाँ ये रहेगा, जो ये डिफरेंस है, दिस विल गिव अस द लॉस फॉर द लेयर. इसको यूज करके लॉस फॉर द लेयर भी कैलकुलेट.
So let's talk about assumption then. Let's see what assumptions are there written. The assumptions made in part 1, we assume sum insured are distributed evenly within each band. Yeah. बाद में they are saying कि we should test this assumption as cedent may deliberately send data banded in a way that makes the actual risk look smaller. Yeah. We have original premium by sum insured band. Ideally, we should obtain detail of individual risk return. We assume risk profile provided is appropriate for the prospective treaty years. If the material changes are likely, we cannot predict the effect. Okay, we assume that same loss ratio applies each year uh, for each band. Okay, we assume same exposure curve is appropriate for each loss band. Uh, we assume no feature of reinsurance agreement that could complicate the calculation. There is no feature of original business that could complicate, so deductible. So these are the assumptions that they have made. Okay, but let's see. So this is the list of assumptions for original loss curve. This will help you in all the type of questions. So let's see what all assumptions are we making. Some insured are distributed evenly over each band. They have also made this one. 1 year of inflation is appropriate. मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने किया था उसमें 1 year था, बट वेन एवर इन्फ्लेशन का कोई दिया है ट्रीटमेंट, कोई ईयर का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इन्फ्लेशन का ट्रीटमेंट दिया है, तो इन्फ्लेशन पे एक असम्पशन बनाना है, इन्फ्लेशन के रेट पे भी बनाना है. उसमें 3% था तो 3% इन्फ्लेशन रेट इज अप्रोप्रिएट.
ठीक है. Same risk profile will be appropriate for next year since प्रीमियम जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. तो दिस इज एन अजम्पशन जो कि हमेशा बना सकते हैं ओरिजिनल लॉस कर्व पे, आईएलएफ पे भी मे बी, कि जो सेम रिस्क प्रोफाइल है जिसके बेसिस पे वी आर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम दैट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर द नेक्स्ट ईयर आल्सो फॉर व्हिच वी आर कैलकुलेटिंग द प्रीमियम. सेम एक्सपोजर कर्व विल अप्लाई द नेक्स्ट ईयर. तो अगेन अगर सेम रिस्क प्रोफाइल है, सेम रिस्क प्रोफाइल का हमारे पास एक्सपोजर कर्व है, तो नेक्स्ट ईयर भी सेम एक्सपोजर कर्व will be applicable. Claim size distribution will be unchanged. अब जो एक्सपोजर कर्व है वो क्लेम कॉस्ट डिफाइन करता है. अगर नेक्स्ट ईयर का क्लेम कॉस्ट का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है तो ओरिजिनल लॉस कर्व भी चेंज हो जाएगा. दैट लाइक वी हैव सीन कि अगर इस साल हम जो ओरिजिनल लॉस कर्व ले रहे हैं वो ऐसा है, नेक्स्ट ईयर मोर अट्रिशनल लॉस लेस लार्ज लॉस हो जाएगा तो कर्व भी चेंज हो जाएगा. तो इफ द लॉस साइज और क्लेम साइज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जा रहा है तो लॉस कर्व हमें चेंज करना होगा. तो वी आर मेकिंग एन असम्पशन ऑन द कॉस्ट लॉस, ये क्लेम साइज पे भी. लॉस रेशियो हमने यहाँ पे भी लिया है, लॉस रेशियो हर क्वेश्चन में ही रहेगा. वट एवर इज द लॉस रेशियो वी राइट दैट. यहाँ पे 50% ऑफ लॉस रेशियो विल बी अप्लाई नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. ठीक है. Same loss ratio applies for each band. I guess they have made this assumption. If not, you can make कि as you have as you know कि losses का band increase होता है तो loss tendency change हो जाता है. हायर बैंड पे फ्रीक्वेंसी कम होता है, सिवेरिटी ज़्यादा होता है. तो जो लॉस रेशियो होता है मे नॉट बी सेम फॉर ईच बैंड. लोअर बैंड और अपर बैंड का लॉस रेशियो सेम नहीं होता, बट यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग कि सेम है. तो वी नीड टू मेक दिस assumption. सेम एक्सपोजर कर्व अप्रोप्रिएट फॉर ऑल लॉस बैंड. ठीक है. और ये जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम वो वाला assumption भी ले सकते हैं कि y इज इंडिपेंडेंट ऑफ m. जो हमारा assumption है ओरिजिनल लॉस कर्व का कि y इज इंडिपेंडेंट ऑफ m, सॉरी, y इंडिपेंडेंट ऑफ m, ये वाला assumption भी ले सकते हैं. लॉस कैन नॉट एक्सीड द सम इन शॉर्ट. अगेन ये एक assumption है ओरिजिनल लॉस कर्व का, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है वो 1 ही हो सकता है सम इन शॉर्ट. यहाँ पे भी जब हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स बाई एम, एम इज द सम इन शॉर्ट, तो y ग्रेटर देन 1 तो हो नहीं सकता. तो ये जो है x कैन नॉट बी ग्रेटर देन सम इन शॉर्ट. ये एक assumption है दैट वी कैन मेक. ये सब assumptions they haven't made, बट जब भी ओरिजिनल लॉस कर्व का क्वेश्चन आएगा एंड यू नीड टू मेक assumptions, ये सारे assumptions यू कैन मेक. द मोर assumptions यू राइट, इट वुड बी मोर लाइकली कि assumptions पे ज़्यादा मार्क्स होगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग मोर वुड इंक्रीज. कि जितने assumptions है सारे बनाओगे. इंटरपोलेशन इज अप्रोप्रिएट. इस क्वेश्चन में वी हैवंट इंटरपोलेटेड, बट अगर इंटरपोलेट कर रहे हो तो इंटरपोलेशन इज अप्रोप्रिएट. देयर इज नो स्टैक लिमिट डिडक्टेबल रीइंस्टेटमेंट इन्यूरिंग रीइंश्योरेंस. इसका जो है assumption they have made. So this is the list of assumptions, fairly exhaustive, but if you come across any other assumptions that you feel is missing from here, तो वो भी you can make. ठीक है. It is good to have this handy. ठीक है, रिवीजन के लिए इजी होता है. तो assumptions of original loss का लाइक का जब भी ओरिजिनल लॉस का क्वेश्चन आएगा तो उसका assumptions का भी क्वेश्चन आएगा ही. तो you can have this. Is it clear? Can we move from here? Good. So that was it for कैट मॉडल एंड ऑल. कैट मॉडल का हमने ज़्यादा क्वेश्चन किया नहीं है, थ्योरी वाला. ठीक है, थ्योरी वाला एक सिंपल हमने 5 मॉड्यूल्स कर लिया H5.
उसके बाद में पेरिल्स है, एंड अलग अलग पेरिल्स जैसे अर्थक्वेक, हरिकेन, इनका फीचर्स थोड़ा बहुत कर लेना, बुक में है आई गेस। हरिकेन में जैसे है कि फॉरवर्ड विंड स्पीड की रेट एट विच द विंड इज डिकेइंग, ये सब जो प्रॉपर्टीज है वो याद कर लेना। मे बी यू विल हैव सम क्वेश्चंस इन बुकलेट आल्सो, दैट वाज मोस्टली थ्योरी सो आई हैव स्किप्ड दोस थिंग, ठीक है। We have completed almost everything over here. No? Last page question you had. This was the question, right? Booklet 4 का। तो इसमें what is the doubt over here कि पूरा question we need to solve, specific part में problem है। सर जो एक्सपोजर कैलकुलेशन है First उसका one, नो द सेकंड पार्ट, second part. या इसमें द ओनली क्वेश्चन इज कि सो द प्रॉब्लम इज कि बीच में ना फिजिकल ईयर चेंज हो रहा है, करेक्ट? हम्म अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें उन्होंने हम्म दो लाइन एंट्रीज यानी 2008 एंड 2009 के लिए उन्हें डिवाइडेड बाय 10 किया इंस्टेड ऑफ डिवाइड बाय 12। तो वो मुझे एक्चुअली ढंग से समझा नहीं कि उन्होंने कैसे मतलब किया है कैलकुलेशन। फर्स्ट लाइन एंट्री तो समझ में आ गई, बट सेकंड और थर्ड मैं नॉट श्योर। ये है। हाँ फिस्कल ईयर 2010 से चेंज हुआ ना, 1 अप्रैल, मतलब 1 जनवरी टू दिसंबर। इस तक में अप्रैल था और यहाँ पे दिसंबर हो गया। हम्म, हम्म, तो देखो, वी हैव 8 के लिए अगर करें तो 1/11/2008, 1/1/2009, 1/9/2009, ये 3 डेट्स है हमारे पास। डेटा है हमारे पास 1/11/2008 का, जो कि 70 है। नहीं, ये लोग ने मिड ईयर लिया है, दिस इज नॉट द स्टार्ट। हाँ, मिड ईयर लिया है ना, हाँ क्योंकि हमें फिस्कल ईयर का एक्सपोजर दिया था। तो ये एक्सपोजर ऐसा नहीं बोला था कि फिस्कल ईयर के कौन से पॉइंट में है, तो राइट, एवरेज पीरियड ऑफ जो फिस्कल ईयर होगा ना, उस पॉइंट पे लेंगे हम डेटा। अच्छा ओके। तो 1/11/2008 पे 70 है, 1/9/2009 पे 71 है। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? इधर 2 मंथ्स, इधर 8 मंथ, क्योंकि स्टार्ट ऑफ 9 मंथ का जो टोटल डिफरेंस है वो 10 मंथ्स का है। तो दैट्स वाई डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाई विद दिस वन, 1 1 है तो 2 महीने का, तो 2/10 किया होगा। सो 2/10 किया ना, इंटरपोलेट किया, बेसिकली इंटरपोलेट किया है विद द रेफरेंस पॉइंट ऑफ दिस। जैसे वी हैव डिस्कस्ड कि जो एक्सपोजर है ना, वो एक्सपोजर हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम का होता है, ठीक है। इफ दे हैव गिवन यू कि एक्सपोजर है आपका एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी फर्स्ट ऑफ द पॉलिसी ईयर और मिड ऑफ द पॉलिसी ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, पॉइंट का अगर आपको एक्सपोजर दिया है तो आप उस पॉइंट पे ही वो मानोगे। और जहाँ पे क्वेश्चन पे ये दिया है कि जैसे मान लो कि इंटरपोलेशन यहाँ पे नहीं करना पड़ता, अगर सिर्फ फिस्कल ईयर जो है, फिस्कल ईयर पॉलिसी ईयर सब सेम होता है। फिस्कल ईयर भी 1 जनवरी टू 1 दिसंबर तक चल रहा है, पॉलिसी ईयर भी 1 जनवरी टू 1 दिसंबर तक चल रहा है। हमें एक्सपोजर फिस्कल ईयर का दिया हुआ है 70, 55, 70, 71। तो इस केस में क्या होगा ना, इस केस में हमें इंटरपोलेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि पॉलिसी ईयर और जो एक्सपोजर ईयर है वो दोनों कंसिस्टेंट है, ठीक है। आप एक्सपोजर ईयर पे भी अजम्पशन बनाओगे मिडिल ऑफ द ईयर का,
पॉलिसी ईयर पे भी आप असम्पशन बनाओगे मिडल ऑफ द ईयर का, तो जो दोनों का पॉइंट होगा वो सेम होगा, तो इंटरपोलेशन का जरूरत नहीं होगा, तो उस पर हमें ये मिडल पॉइंट ये सब झमेला लेने का जरूरत नहीं है। सिर्फ जो एक्सपोजर है उसी को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे फिस्कल ईयर भी चेंज हो रहा है। पहले अप्रैल टू मार्च चल रहा था, फिर जनवरी टू दिसंबर हो गया, फिर बीच में एक ईयर हुआ जिसमें ट्रांजिशन हुआ, तो इसके अंदर में जो एक्सपोजर का डेटा है वो भी पूरा नहीं है। तो दैट्स वाई हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम विच असम्पशन लेकर के हम मिडल ऑफ द ईयर का पॉइंट ऑफ टाइम लेकर के फिस्कल ईयर का ले लिया हमने कि इस पॉइंट ऑफ टाइम का एक्सपोजर दिया है हमें। और पॉलिसी ईयर पे भी अगेन मिडल ऑफ द ईयर पे एवरेज, हमेशा एवरेज एक्सपोजर निकालना है। अगर एवरेज एक्सपोजर आपको दिया है तो इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर एवरेज एक्सपोजर नहीं दिया है तो यू नीड टू इंटरपोलेट एंड कैलकुलेट द एवरेज एक्सपोजर। पूरे पीरियड का एवरेज एक्सपोजर निकालना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे पहले पॉलिसी ईयर का एवरेज पॉइंट निकाल लिया, फिस्कल ईयर का एवरेज पॉइंट निकाल लिया, और उसके बाद इंटरपोलेट कर लिया यूजिंग द डेटा। एक बार सिर्फ मतलब फर्स्ट 3 लाइंस का समझा सकते हैं क्या कि कैसे, लाइक या तो टाइमलाइन बनाकर या कैसे? ये वाला हाँ। देखो, तो 2007 का जो हमारा फिस्कल ईयर का डेटा था वो आई गेस फर्स्ट क्या था इसका डेटा, एक बार डेट बताना। एक मिनट उसमें। नवंबर हाँ, सो फिजिकल पीरियड बताओ कलर। हाँ फिजिकल हाँ, पीरियड 1 मई 2007। फर्स्ट में हो गया 5 2007 से लेकर के 30th अप्रैल 2000। 30 अप्रैल 2008 तक का, ठीक है। और सिमिलरली 2008 में भी यही रहा होगा, करेक्ट। और 2009 में ये फर्स्ट फर्स्ट 5 2009 से 31। 31/12/2009 हो गया, ठीक है। तो इधर पे हमारा फिस्कल ईयर चेंज हो चुका है, ठीक है। करेक्ट। अब ये जो भी एक्सपोजर दिया है ये फॉर दिस फिस्कल ईयर दिया। अब अगर ठीक। ये फॉर दिस फिस्कल ईयर होगा तो ये भी कोई एवरेज एक्सपोजर ही है। एवरेज एक्सपोजर कौन से डेट पे होगा? अब यहाँ पे सेम पॉलिसी इंसेप्शन इवनली थ्रू आउट द फिस्कल ईयर वाला अजम्पशन लेकर के मिड पॉइंट ऑफ द फिस्कल ईयर पे ये पॉलिसी हम निकाल लेंगे कि एक्सपोजर उस टाइप का है। मिडल लेंगे तो 6 मंथ यहाँ से लेना होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर खत्म तो नवंबर। फर्स्ट ऑफ नवंबर का बन गया हमारा मिड पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ नवंबर का मिड पॉइंट बन गया। और यहाँ पे सिंस फर्स्ट मई से लेकर के दिसंबर तक का डेटा है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 महीने का डेटा है। आधा मतलब 4 महीना, तो मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त खत्म अक्टूबर, अगस्त खत्म सितंबर, तो फर्स्ट सितंबर इज द मिड पॉइंट। फर्स्ट सितंबर इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे पहले हमने तीनों ईयर का मिड पॉइंट निकाल लिया, तो हमें डेटा का पॉइंट मिल गया। अब अगर टाइमलाइन बनाए तो 111 है, 111 8 है, एंड 1909 है, ठीक है। इसमें 55 का एक्सपोजर है, इसमें 70 का एक्सपोजर है, इसमें 71 का एक्सपोजर है। ये हमें एक्सपोजर का डेटा मिल चुका है। अब जो पॉलिसी ईयर है वो डिफरेंट है, वो चल रहा है कि दिसंबर जनवरी से दिसंबर चल रहा है ना पॉलिसी ईयर। नो, द इट इज फ्रॉम जुलाई टू जून। कूल, तो वो जुलाई टू जून चल रहा है, तो जुलाई से 6 मंथ लोगे तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर खत्म हो गया, तो फर्स्ट ऑफ जैन ऑफ ईच ईयर जो है हमारा वो पॉलिसी है। पॉलिसी ईयर चेंज नहीं हो रहा है,
तो पॉलिसी ईयर हमेशा 1 Jan है, ठीक है। तो अब ये 3 पॉलिसी ईयर्स का डेट है, जो ये वाला डेट है वो यहाँ पे लाई करेगा 118 पे, उसके बाद पे 9 पे है तो ये यहाँ लाई करेगा 119 पे। अब दूसरा वाला 10 है तो उसके लिए टाइमलाइन एक्सटेंड करना होगा, हम इतना ही देखते हैं। तो अब इस डेटा पॉइंट्स पे हमें डेटा पता है, इस पे निकालना है, तो सिंपल इंटरपोलेशन करके निकल जाएगा हमेशा। एक्सपोजर, तो एक्सपोजर के साथ में दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक्सपोजर हमेशा एवरेज पीरियड पे कैलकुलेट होता है। अगर एवरेज पीरियड आपको दिया है और सेम ही पीरियड पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपको इंटरपोलेट करने का, एवरेज कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। बट किसी अलग एवरेज पीरियड पे आपका डेटा है एक्सपोजर का, बट जो कैलकुलेशन के लिए आप पीरियड यूज़ कर रहे हो वो डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा ना कि उस केस में तो आपको एक्सपोजर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए, इंटरपोलेशन यूज करने के लिए ऑलवेज यू नीड अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहला एक्सपोजर डेटा का एवरेज पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट कर लिया, पॉलिसी पीरियड का एवरेज पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट कर लिया, और इन दोनों को यूज करके इंटरपोलेशन यूज कर लिया। ठीक है, गॉट इट नाउ, थैंक यू। वो मुझे पॉइंट ऑफ टाइम रियलाइज नहीं हो रहा था बिकॉज आई वाज टेकिंग इट फॉर द एंटायर पीरियड। मतलब जैसे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं ना, वैसे मैं कर रही थी, तो इसलिए आई थिंक आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड। थैंक्स। हाँ। So I guess any, do you have any more question in any other booklets in general? I have like a general doubt not related to any booklet, but Okay. actually I'm having problem with the actuarial investigations chapter. Okay. So I mean, I just like there was this one question in April 21 जिसमें ना Okay. उन्होंने डेटा दिया था कैट मॉडल का, एंड उन्होंने बोला था कि इस पे बस कमेंट करो, एंड इट वाज लाइक अ वेरी, मतलब 6 मार्क या 7 मार्क का क्वेश्चन था। तो मतलब कि कैसे, हाउ लाइक व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, लाइक कैसे, हाउ डू वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट? सो कैट मॉडल है, कैट मॉडल के लिए हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था, तो उसमें अगेन क्लेम्स के लिए सजेशन देना होगा, कमेंट करना है कि क्या क्लेम ग्राउंड अप है कि इंश्योर्ड का लॉस है, वेदर इज इट नेट ऑफ इंश्योरेंस, ग्रॉस ऑफ इंश्योरेंस, अल्टीमेट क्लेम काउंट हमने प्रोजेक्ट कर रखा है क्या, अदर अजम्पशंस के लिए। अभी कैट मॉडल है तो कैट मॉडल वाला जो क्वेश्चन था वही सेम है वो, मतलब एक जब। मिनट, आई जस्ट शो यू, आई थिंक बेटर समझ में आएगा, जस्ट मिनट। उसमें डेटा दिया था एंड उसके हिसाब से था, इट वाज नॉट जस्ट। ओके। कैन आई स्क्रीन शेयर? Yeah, this is the question. So we have adjusted insurance company comment on the at model result. Okay, result पे comment करना है। Hmm. So insurance company writes a large portfolio of construction risk in Central Europe. The company has extracted the following windstorm loss observed in 10 years. The loss have been adjusted for changes in exposure and claim inflation. ठीक है, लॉस ईयर दिखाना, adjusted loss ईयर exposure, and this is the windstorm applied current portfolio resulting in the occurrence accidents probability of this 20%. Comment on the exposure itself. तो इसमें यही लिखना है कि वो मे बी इन लोगों ने एक्सपेक्टेड लॉस कॉस्ट के ऊपर में कमेंट किया होगा। पहले तो स्टेटिंग दी ऑब्वियस कि एक्सपेक्टेड लॉस फ्रॉम द मॉडल इज 35.35 मिलियन। उसके बाद 1 in 200 का प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे ऐसे 0.1 का, तो हायर लॉसेस का जो है रिजल्ट दे दिया, ठीक है। ऑकरेंस एक्सीडेंट्स प्रोबेबिलिटी है तो मे बी उस पर कमेंट किया होगा।
एडजस्टमेंट का दिया है तो समथिंग। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हमें क्वेश्चन पे डिस्क्राइब भी किया है ना, सेंट्रल यूरोप तो कमेंट ऑन दी रिजल्ट, इन पॉइंट्स पे ही आपको एक एक करके कमेंट करना है कि लार्ज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन रिस्क है। तो विंडस्टॉर्म लॉस है, तो विंडस्टॉर्म लॉस पे मे भी आप कुछ कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एडजस्टमेंट और एक्सपोजर पे तो करना ही है, और बाकी बाकी यहाँ पे जो रिजल्ट है उस पर जो ऑब्वियस ट्रेंड है कि एक्सपेक्टेड लॉस क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों में कमेंट करना। तो व्हाट हैव दे डन? या मतलब सिमिलर ओनली, फर्स्ट तो एक्सपेक्टेड लॉस पे किया है उन्होंने कमेंट, जैसा आपने बोला, देन वन इन एवरी, मतलब ये एक मिनट, अकॉर्डिंग टू द मॉडल 3.5 लॉस इन 2015 इज एक्सपेक्टेड, मतलब कि उन्होंने बोला है कि इन दोनों के बीच में तो ये 50 to 100 ईयर्स के बीच में आएगा 3.5 मिलियन का लॉस। हाँ, तो अगेन वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जो रिजल्ट आया है कैट मॉडल से, उस पे ही किया है, कमेंट करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियस पहले ही स्टेट कर दो कि एक्सपेक्टेड लॉस क्या है, 1 in 200 या 1 in जैसे ये 1 in 100 ईयर लॉस है, 0.1 वाला ना। तो तो 1 in 100 ईयर तो लार्ज लॉस जो है एक्सीडेंट्स का ये इतना है, ठीक है। उसके ठीक। बाद में यहाँ पे एक्चुअल एडजस्टेड लॉस है, तो इस पे आप जैसे बोला है कि ये 2015 का जो लॉस है वो काफी हायर है कंपेयर टू 10 और 11, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हाँ, है? ठीक ठीक है, समझ गए, ओके। चलिए, दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर joining. All the best for your exam. Keep practicing. थैंक यू, थैंक यू। Thank